आज के युग में हम ये समझने लगे हैं कि हम औरतों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और औरतें मर्दों के बराबर आ चुकी हैं। We talked to a cross section of women across India and this is what we found. आपने कुछ सुना हुआ है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में? ना, मैंने सुना, मुझे नहीं पता है क्या कह रही हो, सब मुझे प्रॉब्लम नहीं, इतना कुछ खास तो नहीं पता अभी। इतना कुछ खास नहीं पता। कौन सी तारीख को होता है? जैसे आज 8 मार्च है तो ऑब्वियसली 8 मार्च को होता है। तो आपने पढ़ा है इसके बारे में? नो, पढ़ा नहीं। आज कुछ खास दिन है ये आपको पता नहीं है? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th। आप जानती हैं वुमेन्स डे के बारे में? नहीं। आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 40 तो ऊपर हो गई है। अच्छा, पर ये दिन क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? आपको लगता है कि कोई दिन किसी भी औरत के लिए फ़र्क होता है या रोज़ दिन एक ही जैसे होते हैं? बस एक जैसे ही होते हैं। We observe different days to show our respect towards women. International Women's Day is one of them. The idea of having a Women's Day has its significance in the sense that it draws attention, raises consciousness about the concept as such. And the only thing is that perhaps some of these things, when over a long period of time, or when there is a kind of dumbing down of the whole concept, then sometimes they get reduced to a ritual. So when we celebrate a Women's Day, which means that we are trying to reinforce that women also have their own place in the society and that they should be valued, and there is a lot that needs to be done to improve their situation in life. मैं जानना चाहती थी, अभी कुछ दिन हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे था जी। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के जो दिन हैं वो रेलेवेंट है आज के टाइम पे? Do you think they help? Please. They really do help. These kind of things really help the women. अच्छा, हमारे जो पहली प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उन्होंने भी कहा था if you don't strengthen the women, then nation is not strengthened. Nation is not strengthened. एक बात, और दूसरी बात, विमेंस राइट्स कमीशन जो है उसका कहना भी यही है। वो मानते हैं ऐसा कि हमारे जब बेसिक से जब हमारी नींव पक्की नहीं होती है तो फिर हमारा भवन तो कहाँ से पक्का होगा। What does this day mean to you? Well, it's a lot of events being reported in the media, and well, it's something like that. A class of people are having something to do, something to talk about. You mean other than this, it doesn't mean anything? Well, really, I don't think so. Where maybe the idea of a Women's Day on one day, well, I think it's just another tamasha for a certain class of people. You mean it hasn't percolated down to where it should matter actually? I really don't think so, because if you ask a whole lot of these people below that line, I don't think so they even know the meaning of Women's Day. International Women's Day has a history almost a century old. When in 1909 the first National Women's Day was observed in the United States on 28th of February, the Socialist Party of America designated this day in honor of the 1908 garment workers' strike in New York, where women protested against working conditions. आज कोई खास दिन है जैसे तुम्हें मालूम है? नहीं। स्कूल जाती हो कि नहीं? जाते हो स्कूल? 8 सेक्टर हमको ABCD पूरा आता है। कौन से 8 सेक्टर में कौन से स्कूल? आज एक पंजाबी स्कूल एंटी बड़ा सा खुला हुआ है बच्चों के लिए फ्री में। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दूसरी। तो आज जैसे तुम्हें पता है कि आज लड़कियों का दिन है, वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। जानती हो इसके बारे में? अंग्रेजी पढ़ती हो? अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं है। तो स्कूल जाती हो? अंग्रेजी बोलना आता है पर पढ़ते नहीं है। बोलना आता है? बोलो इंटरनेशनल वुमेन्स डे बोलो। कैसे? इंटरनेशनल बोलो। इंटरनेशनल
जोर से बोलो। इंटरनेशनल वुमेन्स वुमेन्स डे। डे। आज जैसे औरतों का दिन है, यहाँ वो महिला भवन भी इनॉग्रेट हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानती हैं आप? हाँ, जिसके बारे में तो आपको लगता है कि औरतों का दिन कोई ख़ास होता है जिसमें उनको अच्छा ट्रीट किया जाता है या उनके लिए मनाया जाता है? हमें तो नहीं इस बारे में पता नहीं। ऐसे होते हैं, वीरवार हो जाते हैं, कभी वो मान लेते हैं, जैसे कोई त्यौहार आ जाता है मान लेते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते जैसे हैं? होली दशहरा ये ज़्यादा हम सुन के मोटर होता है, छठ होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। तो आपको कुछ मिलता है खास ऐसे त्यौहार पे, कोई तोहफा या कुछ नहीं। पढ़े न लिखे न जानी का पता, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, बाकी जब हम जैसे पीछे इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, अब जब खास दिन कहाँ से मिलेगा, बिना कमाने तो खाने को मिलेगा नहीं। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कुछ हुआ था सरकार की तरफ से, कुछ जानते हो उसके बारे में? अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कितने साल हो गए काम करते हुए? 15 साल हो गए। Subsequently, the day acquired an international character to honor the movement for women's rights and to build support for achieving universal suffrage for women. In 1911, women in Europe organized rallies to ask for a right to vote and to hold public office. एक तो आपको घर जाते हुए शाम हो जाती होगी, तो आपको लगता है कि औरतें जो हैं हमारे देश में, हमारे शहर में सुरक्षित हैं? नहीं, बहुत कम लगता है। घर जाते हुए कभी डर भी महसूस होता है? वो तो होता ही है। The fear never leaves us. Though we are day scholars, we go home. My home is like 14 kilometers from my college and I travel myself. At times when I don't drive myself, I have to take an auto or something. Helpline numbers, they never work. Even if you keep calling the helpline numbers, they're always busy, or they just tell them, they'll just keep telling us that they'll call us after 5-10 minutes, but they never do. So what do you feel that is there any change in terms of women's security? Yeah, I believe that there is some change that has come in the society. We never had these helplines or any this sort of a thing before, but now though they take time, but eventually you have somebody to take care about it and listen to your problems. You have women's cells in all these NGOs. I don't think they were there before. Yeah, the only change that we see is these NGOs have come up, there are helplines, but nothing has ever changed. There is still, the cities are so lawless. What do you do in the hostel on Women's Day? Anything special? No. If we do something for women on a particular day, does that make a difference to their lives? Yes, actually it does, because especially for Indian women I must say, क्योंकि like ज़्यादातर इंਡੀਅਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੂਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। Do you think these days are relevant for women? Absolutely. I think they're very important, because even though people say that every day is a woman's day, I think it's on these days that we actually sit back and reflect about what it means to be a woman, and in today's time what it means to be empowered and to be grateful for all those women over the centuries who have worked so hard to bring us to the position that we are in today. They demanded women's right to work, to vocational training, and to an end to discrimination on the job. It was, however, in 1975 that International Women's Day came to be known as the way we know it now. Over the years, the UN and its technical agencies have promoted the participation of women as equal partners with men. But are we really making a difference? नहीं, सरकार नहीं मदद करती, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आती। वो मेरा तो कुछ कर नहीं रहेगी, पेंशन ही नहीं मिल रही, और मदद क्या करेगी मेरा? अच्छा, पेंशन भी नहीं मिली आपको, बुढ़ापा पेंशन? अभी पीछे 8 मार्च को वुमेन्स डे था, उसके बारे में जानते हो कुछ? नहीं जानते? स्कूल में क्या करवाते हैं, कभी बताते हैं तुम्हें इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में?
कि ये कहते हैं कि लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, लड़कियों को संभाल के रखना चाहिए. I run a bakery. I've been into this profession for the past 22 years. And Okay, you are a businesswoman. Yeah, I run. That tells me that you are an empowered woman. You are independent. Yes, I am. What does Women's Day mean to you? Women's Day, it's a day which I think we talk about all the achievements of women, you know, and celebrate their achievements. Women who are not so privileged also feel the same the way you feel? No, I don't think so, because whenever we talk to our staff or the people who are sometimes, the women are still not, in the rural area, they're still not aware of their own strength, I would say, that they can do so much, and they're still being dominated by men, which is not right, and they should come out of their homes and try to earn their bread and butter themselves and help in the family in whichever way, and they should help their daughters too, make them study and make them independent, then get them married out. One day cannot really make a real difference in, say, even my life as such. But it's a day, as I said, when if we are looking towards those of us who are empowered, if we reflect and think about those who are not so empowered, and we try to reach out to them in some way and to help them to assert their rights, or to at least become aware of their rights, I think we are doing something, and in that way we are making a difference. It may be just a drop in the ocean, but at least there's that drop that's going in there.